Etiological classifications of anemia. First is anemia of blood loss. पहला acute because of trauma, major surgical procedures, postpartum bleeding. Trauma, major surgical procedure, postpartum bleeding. These are acute causes of blood loss anemia. Trauma, major surgical procedures, postpartum bleeding. Trauma, major surgical procedures, postpartum bleeding. These are acute causes of blood loss for anemia. Chronic, like hookworm infestation, bleeding, peptic ulcers, carcinoma colon. IBD, hemorrhoids, excessive menstrual losses. These are chronic causes of blood loss. IBD, hookworm infestation, bleeding, peptic ulcer, carcinoma colon, IBD, hemorrhoids and excessive menstrual loss. पहला पॉइंट क्या था? अनीमिया बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस. अक्यूट में वी हैड postpartum bleeding, major surgical procedures and trauma, major surgical procedures and postpartum bleeding. These are acute causes of blood loss which results in anemia. Chronic causes: hookworm infestations, IBD, hemorrhoids, bleeding, peptic ulcer, carcinoma colon and excessive menstrual loss. Hookworm infestation, bleeding, peptic ulcer, carcinoma colon, IBD, hemorrhoids and extensive menstrual loss. Second broad heading is decreased production of RBCs. ठीक है, जिसमें रेड सेल्स का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा. विच कैन बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. आयरन, इट इफेक्ट्स हीमोग्लोबिन सिंथेसिस. विटामिन B12 and folate. Vitamin B12 and folate affects the DNA synthesis. So nutritional deficiency such as iron deficiency, vitamin B12 deficiency, folate deficiency, इन सब के कारण रेड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. न्यूट्रिशन डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स. फर्स्ट रीज़न, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट. आयरन के कारण, आयरन डिफिशियंसी के कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होता है. विटामिन B12 और फोलेट दे अफेक्ट द DNA सिंथेसिस. सेकेंड, इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक फैनकोनी अनीमिया, स्टेम सेल डिप्लीशन होता है, एंड एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरेशन डिफेक्ट दैट इज थैलेसीमिया सिंड्रोम. जेनेटिक डिफेक्ट्स, इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स जिसमें रेड सेल्स का कम प्रोडक्शन हो, दैट इज Fanconi anemia and thalassemia syndromes. Stem cell depletion, that is Fanconi anemia. Erythroblast maturation defect, that is thalassemia syndrome. Inherited genetic defects जिसमें रेड सेल्स का कम प्रोडक्शन हो, Fanconi anemia, ठीक है, दैट इज स्टेम सेल डिप्लीशन. और थैलेसीमिया सिंड्रोम जिसमें एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरेशन डिफेक्ट होता है. Stem cell depletion, Fanconi anemia, erythroblast maturation defect, that is thalassemia syndrome. Erythropoietin deficiency can be because of renal failure and anemia of chronic disease. Renal failure और anemia of chronic disease के कारण erythropoietin deficiency होगा, जिसके कारण red cells का कम production होता है. Immune mediated injury of progenitors. Immune mediated injury of progenitors like hypoplastic or aplastic anemia, pure red cell aplasia. Hypoplastic or aplastic anemia, hypoplastic या aplastic anemia and pure red cell aplasia. It is an example of immune mediated injury of the progenitor cells. So hypoplastic या aplastic anemia और pure red cell aplasia में भी red cells का कम production होता है. Marrow invasions such as leukemia, lymphoma, secondary carcinomas and granulomatous disease. Leukemia, lymphoma, secondary carcinomas और granulomatous disease के कारण भी रेड सेल्स का कम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इसमें मैरो का इन्वेशन हो जाता है. Marrow invasion can be there in leukemia, lymphoma, secondary carcinomas and granulomatous disease. Inflammatory iron sequestration,
like anemia of chronic disease. अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में इन्फ्लामेटरी आयरन सीक्वेस्ट्रेशन होता है, ठीक है. तो डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स कैन बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट. इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स में स्टेम सेल डिप्लीशन इन फैनकोनी अनीमिया, एरिथ्रोब्लास्ट मैचुरेशन डिफेक्ट लाइक द थैलेसीमिया syndrome, erythropoietin deficiency in renal failure and anemia of chronic disease. renal failure और anemia of chronic disease में erythropoietin deficiency होता है. immune mediated injury of progenitors, that is hypoplastic या aplastic anemia या pure red cell aplasia. marrow invasion in case of lymphoma, leukemia, secondary carcinomas, granulomatous disease. inflammatory iron sequestration in anemia of chronic disease. nutritional deficiency of iron, vitamin B12 and folate. genetic inherited defects, inherited genetic defects like Fanconi anemia and thalassemia syndrome. erythropoietin deficiency due to renal failure or anemia of chronic disease. anemia of chronic disease में there is inflammatory iron sequestration, immune mediated injury of progenitors in case of hypoplastic or aplastic anemia and pure red cell aplasia. marrow invasion in case of leukemia, lymphoma, secondary carcinomas and granulomatous disease. Okay. nutritional deficiency of iron, vitamin B12 and folate. inherited genetic defects में Fanconi anemia or thalassemia, erythropoietin deficiency in case of renal failure and anemia of chronic disease. immune mediated injury of progenitors in case of hypoplastic or aplastic anemia and pure red cell aplasia. marrow invasion in case of leukemia, lymphoma, secondary carcinomas, granulomatous disease. inflammatory iron sequestration in case of anemia of chronic disease. Last is destruction of the RBCs, anemia due to excessive destruction of red cells. This can be because of genetic disorders like sickle cell disease, thalassemia. ठीक है, genetic disorders like red cell membrane abnormalities, enzyme abnormalities and hemoglobinopathies. Examples sickle cell disease and thalassemia. sickle cell disease or thalassemia, these are the genetic disorders जिसमें there is excessive destruction of the red cells. genetic disorders include red cell membrane abnormalities, enzyme abnormalities, and hemoglobinopathies. Examples sickle cell disease and thalassemia. Acquired disorders like which can be immune mediated, toxic, mechanical and infectious causes. ठीक है, immune mediated cause हो सकता है, toxic cause हो सकता है या मैकेनिकल या इन्फेक्शियस कॉज हो सकता है. ठीक है, रेड सेल्स के एक्सेसिव डिस्ट्रक्शंस का. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट, रेड सेल मेम्ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज़, एंजाइम एबनॉर्मैलिटीज़, हीमोग्लोबिनोपैथी. एग्जांपल सिकल सेल डिजीज़ और थैलेसीमिया. रेड सेल मेम्ब्रेन एबनॉर्मैलिटीज़ के कारण, एंजाइम एबनॉर्मैलिटीज़ के कारण या hemoglobinopathies like sickle cell disease or thalassemia में there is increased destruction of red cells. acquired causes में immune mediated, toxin, infectious cause या mechanical causes can be there which can cause excessive destruction of the red cells. So this is the etiological classification of anemia.